Now the question number 2 is, prove that in a parallelogram opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Solution is, it is given that quadrilateral ABCD is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये क्वेश्चन में दिया है, मैं फिगर यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. Here this is A, this is B, this is C and this is D. ABCD एक पैरेललोग्राम है. तो मुझे प्रूव करना है, I am supposed to prove that opposite sides are equal. मतलब ये दोनों equal होंगे, ये दोनों equal होंगे करके प्रूव करना है. I am supposed to prove that AB is equals to CD and BC is equals to AD. AB is equals to CD, ये दोनों इक्वल है, BC is equals to DA और AD. ये प्रूव करना है मुझे. कंस्ट्रक्शन इज, जॉइन AC. आप AC को ज्वाइन कर दो. एंड उसके बाद द प्रूफ इज, इन ट्रायंगल्स ACB एंड CAD, ACB एंड CAD. एक काम करो, आप थोड़ा से हाईलाइट कर दो फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस. एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है, आपके कन्वीनियंस के लिए यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं. दैट्स इट. दिस इज ACB and CAD is this triangle. In these two triangles, अगर मैं इसे एंगल 1 करके अगर मैं बोलूंगा, से दिस इज एंगल 1, ये अगर एंगल 2 है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, ABCD से पैरेललोग्राम होगा तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल्स है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इजंट इट? सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम होगा तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये ट्रांसवर्सल है, तो 1 और 2 कौन सा एंगल्स होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2. अगर मान लो ये एंगल 3 है, ये अगर एंगल 4 है, एंगल 3 वो है, एंगल 4 है, तब क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ABCD तो पैरेललोग्राम है ना, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे. दीज टू आर पैरेलल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइक दिस. ABCD इज ए पैरेललोग्राम, so ये दोनों भी पैरेलल होंगे, which is
BC is parallel to AD, this is a transversal. BC is parallel to AD, तो angle 3 and angle 4 कौन से angles है? Alternate interior angles. Alternate interior angles. And AC is equals to AC is the common side. दोनों ट्राइंगल्स का, इस ब्लू ट्राइंगल का और ये रेड ट्राइंगल का है. ब्लू ट्राइंगल का दिस इज AC, दिस इज रेड ट्राइंगल का भी AC वही है, दैट इज दोनों सेम है. सो बाय ये एस ये द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर द ट्राइंगल what is that ACB, isn't it? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, ACB is congruent to CAD, is congruent to triangle, what is that? CAD by ASA congruent criterion. So अगर ये दोनों triangles congruent है, isn't it? AB is equals to CD. AB is equals to, look at here, AB is equals to CD, and BC is equals to DA. BC is equals to DA. This is by CPCD, corresponding parts of congruent triangles. अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, सो AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू DA. वही हमें प्रूव करना है. AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD बोलो या DA बोलो, मीनिंग सेम ही है, इजंट इट?